Case 2. When the premium is treated as an asset. Now let us see one example to understand the difference between when the premium is treated as an expense and when the premium is treated as an asset. Manish, Sameer and Rahul are partners sharing the profits in the ratio of 5:4:1. They had taken a joint life policy of Rs 1 lakh on April 1, 2009. Annual premium paid is Rs 5,000. The firm treated it as an asset and Sameer died on 20th March 2010. Insurance company paid the amount in full. You are required to pass the journal entries. Now see the first entry. So when the amount becomes due from the insurance company, the entry will be insurance company account debit to joint life policy account. Before this, there will be two entries for the amount paid as the premium and the amount which will be transferred to profit and loss account. The two entries are same as we have done in the case when the premium is treated as an expense. The only difference arises when the amount is transferred to the partner's capital account. When it was treated as an expense by the firm, at that point of time, whole 1 lakh was transferred to the partner's capital account. But here, when the insurance premium is treated as an asset by the firm, then the amount which has not yet been paid, or say the premium amount, will be deducted from the total joint life policy and that amount will be distributed to the capitals of the partner. So here the entry will be joint life policy account debit to Manish capital account, to Sameer capital account and to Rahul capital account. And amount transfer will be, in case of Manish, 5/10 multiplied by 95,000 means 47,500. In case of Sameer, it will be 4/10 multiplied by 95,000 means 38,000. In case of Rahul, it will be 1/10 multiplied by 95,000 means 9,500. And the narration will be being the amount of policy distributed. So this is how the entries are passed when joint life policy is treated as an asset by the company. Now let us take case 3. When the premium is treated as an asset and the joint life policy reserve account is maintained. अब यहाँ पे जो पहली एंट्री हमारी होगी वो सेम रहेगी, that is joint life policy account debit to bank account being the premium paid. और जब हम इसको ट्रांसफर करेंगे एप्रोप्रिएशन में तब भी हमारी एंट्री सेम रहती है, दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट एंड नरेशन इज बीइंग द अमाउंट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट. इन केस ऑफ थर्ड एंट्री वी आर गोइंग टू एडजस्ट द पॉलिसी वैल्यू टू द सरेंडर वैल्यू. तो जो पॉलिसी में अमाउंट पड़ा था उस सारे अमाउंट को हमने एक नया अकाउंट खोल के, दैट इज द जॉइंट लाइफ रिजर्व अकाउंट, उसमें हमने ट्रांसफर कर देना है. एंड द एंट्री विल बी जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व अकाउंट डेबिट टू जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट. उसके बाद जब हमें इंश्योरेंस कंपनी से वो पैसा मिल जाएगा एट द टाइम ऑफ द मैच्योरिटी और एट द टाइम ऑफ डेथ ऑफ एनी पार्टनर, देन द एंट्री विल बी whatever we are going to receive, we will be debiting that is bank account debit to joint life policy account. वो पॉलिसी जिसके अगेंस्ट हमें अब पैसा मिला है. तो इसके बाद हम क्या करेंगे, जो जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व अकाउंट हमने खोला था उस रिजर्व अकाउंट को हमने अब क्लोज कर देना है. क्लोज करने के लिए हम क्या एंट्री पास करते हैं, जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व अकाउंट डेबिट टू जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट. And for closing the joint life policy, our entry will be joint life policy account debit to partners capital account. तो पॉलिसी में जितना भी पैसा मिला होगा वो पार्टनर्स को यहाँ पे आकर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. So this is how we maintain accounts for joint life policy. Now let us take one example. We are going to prepare final accounts for the partnership firm. जितना हमने अभी तक सीखा है उन सारी एलिमेंट्स का, उन सारी एडजस्टमेंट्स का ध्यान रखते हुए अब हम इस क्वेश्चन में फाइनल अकाउंट्स बनाएंगे. सो योर क्वेश्चन इज राम एंड श्याम वर पार्टनर्स विद द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ 3:2. फ्रॉम द फॉलोइंग balances
extracted on 31st March 2010, you are required to prepare the final accounts for this partnership firm. Drawings. For Ram it is 1200, for Sham it is 800. Capital. In case of Ram it is 6000, in case of Sham it is 5000. Current accounts as on 1 April 2009, that means the opening balances of the current accounts. Ram 280, Sham 160. Then there is opening stock, purchases 5400, sales return are 200, purchases return are 150. Land and building, plant and machinery, furniture, then wages, salaries, bill receivables 1200, bill payables 200. Debtors are 3600, creditors are 800. Discount 120 on the debit side means discount allowed. 150 on the credit side means discount received. Rents are rates rupees 80. Bad debts 140. Insurance 90. Salesman commission 340. Bank overdraft and cash. Now cash will be on the debit side, that is 200, and bank overdraft will be on the credit side, means 200. There is some additional information. And information says that closing stock was rupees 1800, provision for bad debts to be created at the rate of 5%, outstanding salaries rupees 100, goods destroyed by fire rupees 800, and insurance company agreed to pay rupees 700 on the same. Interest on drawings and capital to be charged at the rate of 6% per annum. Ram is entitled to salary of rupees 120 per annum. You are required to depreciate land and building at rate of 5%, furniture at rate of 10%, and plant and machinery at rate of 15%. Now let us first of all prepare the trading and profit and loss account. So in front of your screen you can observe the trading and profit and loss account for the year ending 31st March 2010 for this partnership firm run by Ram and Sham. You can see there is a debit side and credit side as well. Now let us extract some of the information from the question so as to prepare the trading and profit and loss account. We'll be starting up with the trading account, and the information required to prepare a trading account is opening stock, closing stock, purchases, sales, returns and any sort of direct expenditure. अब ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनता है, अगर आपको सोल प्रोप्राइटर वाला केस याद हो तो सेम फॉर्मूला से ट्रेडिंग अकाउंट हम यहाँ पे भी बनाएंगे. हम डेबिट में लिखते हैं टू ओपनिंग स्टॉक, देन टू परचेजेस और टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस, और क्रेडिट साइड पे हम लिखते हैं बाय सेल्स, बाय क्लोजिंग स्टॉक और एनी सॉर्ट ऑफ इनडायरेक्ट इनकम्स. So the first item which we are going to pick out from this information is टू ओपनिंग स्टॉक अमाउंटिंग टू रुपीज 1100. ओपनिंग स्टॉक को हम डेबिट साइड पे पोस्ट कर देंगे. इसके बाद अगली इंफॉर्मेशन जो हमारे पास आती है वो है परचेजेस. परचेजेस आर 5400, लेकिन उसके साथ अगर आप देखें तो हमारे पास कुछ रिटर्न्स भी थी. तो जो रिटर्न्स हमें क्रेडिट साइड पे दी हुई है, इसका मतलब वो रिटर्न्स हमने वापस की है, वो रिटर्न हमने परचेजेस रिटर्न की है और 150 इसका बैलेंस है. तो इसका मतलब जो नेट परचेजेस थी वो कितनी आएगी, 5400 माइनस 150 मीन्स 5250. नेक्स्ट इज सेल्स. अब सेल्स का क्रेडिट बैलेंस होता है, इसलिए हमने सेल्स को लिखा है ट्रेडिंग अकाउंट में बाय सेल्स अकाउंट अमाउंटिंग टू रुपीज 8000. लेकिन उसके साथ कुछ सेल्स रिटर्न भी हो गई है. सेल्स रिटर्न आर रुपीज 200. इट मीन्स द नेट सेल बाय द कंपनी इज 8000 माइनस 200 मीन्स 7800. नाउ कम्स द डायरेक्ट एक्सपेंडिचर. और इस इंफॉर्मेशन में सिर्फ एक वेजेस ही हमारे पास डायरेक्ट एक्सपेंडिचर आता है. सो हम क्या लिखेंगे, टू वेजेस अकाउंट 250. नेक्स्ट इज द क्लोजिंग स्टॉक. क्लोजिंग स्टॉक के लिए हम क्रेडिट साइड पे जाकर लिखेंगे बाय क्लोजिंग स्टॉक रुपीज 1800. अगर आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन में याद हो तो वहां पे लिखा था कि हमारे पास 800 रुपए की गुड्स थी जो डिस्ट्रॉय हो गई है और उसमें से 700 रुपए इंश्योरेंस कंपनी ने हमें वापस कर देना है. तो ट्रेडिंग अकाउंट में जो गुड्स डिस्ट्रॉय हो गई हैं उसका इफेक्ट हम डालेंगे और जो इंश्योरेंस कंपनी ने हमें दिया है वो हमारी एसेट बन जाएगी और जो हमारा लॉस हो गया है उसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रीट करेंगे. तो यहाँ पे
गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर को ट्रीट करने के दो तरीके हो सकते हैं, या तो आप इसको परचेजेस में से लेस कर दीजिए या फिर आप इसको ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड पे लिख दीजिए। तो हम इसको ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड पे लिख देते हैं और हम लिखेंगे बाय गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर। कितने अमाउंट की गुड्स डिस्ट्रॉय हुई थी? 800 रुपीज की गुड्स डिस्ट्रॉय हुई हैं, तो पूरे 800 रुपीज हमने यहाँ पे लिख देने हैं। सो इसके बाद हम क्या करेंगे,